Namaskar, warm welcome you all on this live interactive session present by CIET NCRT. My name is Rajan Rajput and you all are watching us on eVidya channel number 10. For class 10 students, this is a session of mathematics and topic for today is statics part 2. What we learned in part 1, we definitely summarize in this session. So if you have any queries and doubts regarding this topic, so let us know through the mediums, like you can make a call to us on the number that is also flashing on your screen, that's 8800440559. Or you can write to us on mail ID that is also given on your screen. It's dth.class10@ciet.nic.in. So without any further delay, let's quickly meet to our today's guest. We are with Ma'am Savita Grak. Ma'am is a coordinator from Geeta Niketan Avasiya Vidyalay, Salarpur Road, Kurukshetra. Ma'am, namaskar, स्वागत है. नमस्कार सृजन और हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार. So in the previous sessions we have discussed about data, primary and secondary data, direct method and assumed mean, method of calculating mean. So in today's session we definitely going to discuss step derivation method of finding mean. Yes, sure. So as we have already told to our viewers that in the previous session we have discussed about data. What do we mean by data? Then we also have, it has also been discussed that what do we mean by primary data, secondary data, then definitely the two methods for calculating the mean, and these two methods were direct method and then assumed mean method. And if I talk about that what we are going to discuss today, so it will be, as you have told to our viewers, that step deviation method for calculating the mean. So what is the step deviation method? Let us discuss the same. Yes. If I'm talking about the method, that means we have to achieve the same goal. We have to find the mean only, but the only thing is this time the method is different. So our viewers have discussed that what do we mean by direct method. They have calculated the mean by direct method, means directly multiplications will be giving the answer. And then assumed mean method was there, and under the assumed mean method they have applied the formula for finding the mean, which is that x bar. We know that x bar means mean, that is equals to a plus sigma fi into di whole divided by sigma fi. So what was the value of di here? The di values is xi minus a. Alright, where a is representing the assumed mean, that means the mean assumed by our viewers from the given data, from the given class intervals. They will be finding the class marks, and after that one of the class mark will be assumed as the mean, and then the particular method had to be applied as we have discussed in our previous session. Today in the step deviation method, what to do, dear viewers? Simply as you have done for the assumed mean method. So Srijan, here also our viewers will be doing the same method, but in place of di, they will have to use ui. Okay. And definitely if they are using in place of di the value of ui, so there will be a value h, as I can highlight the same here. H will be multiplied with sigma fi ui whole divided by sigma fi. Now from where this h is entering, actually if in the value of di we simply multiply it by h and we divide it by h, we will definitely be getting that there is no difference in the value of di. If we multiply the value of di with h and we divide the same by h, where h is representing the class size, तो किसी भी तरह का कोई भी difference नहीं होगा. So what our viewers are doing? They'll write that ui equals xi minus a whole divided by h. So in the same method, if in place of di they are using ui, then they need to multiply that particular expression with h, that is class size. Now let us discuss the same with the help of a question, and then it will become more easier to our students. What the question is, it is 30 women were examined in a hospital by a doctor, and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows.
we have to find the mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. We have to choose the method on our own. So first of all, what we can see here, हमें observe करना है that the given group frequency distribution table, whether that is in the continuous order or that is discontinuous. Continuous or discontinuous का मतलब क्या है dear viewers? That upper limit of one class should be equals to the lower limit of its next class, of its preceding class. You can see that in every class, the upper limit of the first class is equal to the lower limit of the class preceding it. So the class intervals are already given in the proper way, in the continuous way. The number of women, that means the frequency, is also given to us. We need to find the class mark according to each class. So the first is 65 to 68. How to find the class mark? Let us recall as you just have to add both of the limits, lower limit and upper limit, and then you will divide the same by 2. So what you are getting, you can simply say that this is 133 upon 2, which can be rewritten as 66.5. Similarly, the next class mark is 69.5, then 72.5, 75.5, then 78.5. The class marks are written here properly. Now what we have to do, if you will go for the direct method, you can directly find the value of Fi into Xi. But I just want to tell you people that if you will apply the direct method, there can be a mistake done by you because the multiplication in decimals and you are in a hurry if you are attempting the questions in your examinations. So what you have to do, better you apply the method, either assumed mean method or step deviation method. Let us discuss how to find the step deviation method. For that, you just have to find the value of A out of these Xi's, and we have taken the middlemost value as assumed mean, which is 75.5. Now what will you do? You will find the value of Ui, and the value of Ui is Xi minus A, which has been assumed as 75.5, whole divided by H. H means the class size, and what is the class size? That is equals to upper limit minus lower limit. For this question, it is 71 minus 68 or 68 minus 65, so it is 3. Now find the value of U1. What that will be? That is equals to 66.5 minus 75.5 whole divided by 3. You can simply say that it is equals to negative 9 upon 3, which is giving you the value negative 3. Similarly, the next value U2, which you have to write here in the second column, that is equals to 69.5 minus 75.5 upon 3, which is giving us negative 2, similarly negative 1, 0, then 1, 2 and 3. In this way, somehow you might be thinking that this is a different method or tough method. The method is not tough, but it is a method which will make your calculations easier. Now, what will you say about Fi into Ui? Simply, you can see it clearly. Let us use a different color to show you the same. See, this is 2 and this is negative 3. You just have to multiply these. This can be done on your fingertips. This is negative 6, then negative 8, negative 3, then 0, then 7 times 1, which is providing us 7, then 4 times 2. So the calculations are becoming very easy this time. Now you will add all the positive numbers and you will add all the negative integers, and then finally you will be able to find the value of sigma Fi into Ui. And what that value is, that is equals to definitely 4 you are getting from here. As 7 plus 8 plus 6 is giving you 21, and 6 plus 8 plus 3, that is providing you what? 17. So 21 minus 17 gives you 4, and you have to find the value of your mean. So let us just apply the formula. What it is? We just have discussed for the same, that is mean equals A plus H into sigma Fi Ui whole divided by sigma Fi. So what you are able to get from here? The value of A, that is 75.5, plus the value of H, that is the class size, which is 3,
into sigma FIUI, which is 4 whole divided by the sum of the frequencies, which is equals to 30, because there are total 30 women. So what you are able to say? You can say from here that the mean is 75.9. So with the help of this method, it becomes very easy to calculate the particular values. All right. Right, Now, ma'am. We also want to know that how to calculate mode and medium. all right. Ji Srijan, so now we'll discuss that how to calculate the value of mode. Mode and medium, And for yes. calculating mode, we just have to need a formula. What that formula is, the mode of grouped data, how to find that. Before talking about how to find that, let us discuss that what do we mean by mode. Mode is simply the highest frequency number. अगर हमारे स्टूडेंट्स को हम कुछ एक डेटा दे देते हैं, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट एंड द टेस्ट वाज ऑफ 50 मार्क्स. So one student is getting 41, one is getting 47, one child is getting 50, one child is getting 39 marks, another is getting 25 marks, one child is getting 28 marks, and one child is getting 49 marks. So if we talk about the mode here, so you can say every number is repeating itself single time. कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ईच नंबर विल बी ट्रीटेड एज मोड. लेकिन अगर इसी डेटा में मैं आपको दे देती हूं कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग 49 मार्क्स, ओके, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर अब कौन सा हो जाता है? दैट नंबर बिकम्स 49. देयरफॉर द मोड फॉर दिस डेटा बिकम्स 49. Similarly, if we talk about the definition of calculating mode, the mode or modal value. Sometimes ऐसा भी होता है कि हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन किया जाता है फाइंड द मॉडल एज. आपको कोई भी एज ग्रुप गिवन है अलग अलग और मॉडल एज पूछा गया है, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा. तो मॉडल वैल्यू मीन्स मोड ही कैलकुलेट करना है हमारे व्यूअर्स ने. एंड व्हाट दैट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली. जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है दैट विल बी नोन एज, जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है दैट विल बी नोन एज द मोड. सो लेट अस डिस्कस कि मोड कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एल, वेयर एल इज प्रेजेंटिंग द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. तो यहां से हमें क्लियर होता है हमारे सभी क्लास इंटरवल्स में से कोई एक क्लास ऐसी होगी जिसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास. एंड वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन, विल डिस्कस दैट व्हिच क्लास इज ट्रीटेड एज मॉडल क्लास. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं दैट द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल और क्लास साइज इज नॉन एज एच. एंड व्हाट इज, आपके फॉर्मूला में एल यूज हुआ है, स्मॉल एच इज यूज्ड हियर, F1, F0, F2. तो हमें पता होना चाहिए what is F1, what is F0 and what is F2. F1 means the frequency of the model class. So basically सब कुछ डिपेंड करता है मॉडल क्लास पर. अगर हमें पता चल जाएगा which class is the model class, तो हम L की वैल्यू भी बता पाएंगे, F1 की वैल्यू भी बता पाएंगे, and F0 is the frequency of the class preceding the model class. Model class से just ऊपर वाली क्लास की frequency is known as F0, and उससे just बाद वाली क्लास, that means the class succeeding the model class is known as, the frequency of that class is known as F2. Now let us discuss this with the help of a question. What the question here is, the following is the distribution of the height of students of a certain class in a certain city, and we have to find the mode of the height of the students. So for finding that, let us discuss that whether the given class interval is continuous or not. So no, it is not continuous. First of all, we need to make it continuous. कैसे possible होगा? For each and every class, the upper limit of the first class should be equals to the lower limit of the next class. और उसके लिए मेथड क्या रहता है, वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस. यहाँ पर ये डिफरेंस 1 है, 163 माइनस 162 इज 1. हम उस डिफरेंस को हाफ कर देंगे, वी आर एबल टू से दैट इज 0.5. एंड सभी लोअर लिमिट्स में, इन द लोअर लिमिट्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास 0.5 विल बी सबट्रैक्टेड. So we are able to say that the lower limits are 159.5,
162.5, 165.5, 168.5 एंड देन 171.5। और बैलेंसिंग के लिए सभी अपर लिमिट्स में क्या करना होगा, डेसिमल 5.5 विल बी एडेड। सो नाउ वी कैन सी द मैजिक दैट all the lower limits of the classes becomes equals to the upper limit of the classes preceding them. All right. अब हमने बात की थी, हमें पता होना चाहिए मॉडल क्लास हम किसे कहते हैं। विच क्लास इज द मॉडल क्लास हियर? जिस भी क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी that will be known as considered as the model class. So here we can see that 142, this is providing us the maximum value. So this class will be treated as the model class. All right. Now we have the model class. For that, we have the value of F1, 142. We have the value of F0. What that is? The frequency of the class preceding the model class. F2 is 127 और हमें पता है कि L है the lower limit of the model class which is here 165.5 and the value of H is the difference of the upper limit and the lower limit which is providing us the 3. So we know the formula for finding the mode is equal to L plus F1 minus F0 whole divided by double of F1 minus F0 minus F2 into H. We'll put all the values here, 165.5 plus F1 minus F0 which is 142 minus 118 whole divided by double of 142 which is 242, 248 minus 118 minus 127 multiplied by the value H. So solve this, add the value in 165.5, we will be able to find the value of the mode. Yes, ma'am. All So, right. ma'am, we have short of time, 5 minutes. Let's quickly learn how to calculate median. All right. We are going to discuss how to calculate median. So median is what? These all are the, I would like to tell this Srijan to our viewers कि ये तीनों ही चीजें मीन, मोड और मीडियन होती क्या है? ये सेंट्रल टेंडेंसीज के मेजर्स हैं. हाउ टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा. तो मीडियन इज व्हाट? मीडियन इज द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा. जो भी डेटा हमारे पास है, अगर वो सिंपल है तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम अरेंज कर सकते हैं एंड देन द मिडल मोस्ट वैल्यू विल बी नॉन एज द मीडियन. लेकिन हम बात कर रहे हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा. तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे सामने है, व्हाट दैट इज L प्लस n अपॉन 2. डियर व्यूअर्स, n मीन्स सिग्मा f. फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वहां वो यहाँ पर n की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. So n upon 2 minus CF. CF is a new term to our viewers. We'll discuss that. And what that is? CF is the cumulative frequency. किस चीज की cumulative frequency? Of the class preceding the median class. All right. L जैसे हम बात कर रहे थे मॉडल क्लास की, इसी तरह से L is the lower limit of the median class here. H is the class size and frequency of the median class will be written as F. So let us discuss quickly a question for the same. What the question is, the following is the distribution of the height of students of a certain city. हमें फिर से क्या करना है? We have to find the median in this question, median of the height of the students. So as we have discussed in a previous question, here also we'll arrange the table class intervals in the form such that our upper limits of the classes becomes equals to the lower limit of the classes preceding them. So after doing the same, we have discussed it very much clearly in a previous question, and after discussing it, we need to know that what do we mean by cumulative frequency. सृजन, क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? जिससे अगर मैं कहती हूँ कि किसी टीचर ने 50 मार्क्स का कोई टेस्ट लिया क्लास में और वो क्लास में जाते हैं, देयर आर टोटल 30 स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, और उन्होंने बोला कि वो सभी बच्चे खड़े हो जाएं जिनके लेस देन 10 मार्क्स थे. तो 0, 1, 2, 3, 5 अप टू 9 किसी भी बच्चे के मार्क्स थे तो दे विल बी स्टैंडिंग. Right. देन टीचर सेइंग के जिनके लेस देन 20 मार्क्स थे
तो लेस देन 20 की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर 11 to 20 काउंट नहीं होगा, बल्कि 0 to 20 काउंट होगा। यस मैम। सो दिस इज नॉन एज क्यूमुलेटिव, फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करते हुए चलना है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई, फॉर द फर्स्ट क्लास इट वाज 15, देन अप टू 165.5, यानी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट 165.5 तक है, दीज आर 15 प्लस 118 which is 133, up to 168.5 that is 133 plus the frequency of this class which is 142, so what we are getting 275, इसी तरह से 275 plus 127 402 plus 18। सो फाइनली यहाँ जो नंबर लास्ट में होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते करते जो आपको लास्ट में मिल रहा है, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अभी सिंपली हमें पता होना चाहिए n/2 क्या है। n/2 इज 420/2 विच इज 210। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे व्यूअर्स को ऑब्जर्व करना है कि 210, ये जो 210वां जो बच्चा है ये कौन सी क्लास इंटरवल में आ रहा है, उसी से समझ आएगा कि मीडियन क्लास कौन सी है। तो हम देख सकते हैं अप टू हियर 15 स्टूडेंट्स हैव बीन काउंटेड, अप टू हियर 133 स्टूडेंट्स हैव बीन कवर्ड। सो 134 से लेकर 275th चाइल्ड तक हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कवर हो रहा है इस क्लास इंटरवल में। यस। सो 210 भी यहीं पर ही कवर हो रहा है, दैट मीन्स दिस क्लास विल बी ट्रीटेड एज द मीडियन क्लास। तो अगर मीडियन क्लास आ जाती है, एल निकल आता है 165.5, हमारे पास एल है, n/2 है। फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए दो और चीजें चाहिए। वन इज एफ विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास विच इज 142। एक चीज हमें चाहिए सी एफ, हमने बात की थी सी एफ होता है जी। सो डियर लर्नर्स, हमने स्टैटिक्स पार्ट 2 में मोड, मीडियम और मीन को जो है डिफरेंट डेरिवेशन तरीके से निकालने को सीख लिया है, और अब बताना चाहेंगे कि हम इस सत्र को अंत कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ी हैं मैम सविता ग्राग, कोऑर्डिनेटर फ्रॉम गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, सलारपुर रोड, कुरुक्षेत्र। मैम नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस रीजन नमस्कार। जस्ट फॉर्मूला यहाँ पर है, हमारे व्यूअर्स अप्लाई करेंगे, वो सॉल्व कर पाएंगे। और मैं चाहूंगी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं डियर व्यूअर्स, आप हमसे जरूर शेयर कीजिए। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। डियर लर्नर्स, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर रिगार्डिंग अवर ई कंटेंट कंपटीशन फॉर द ईयर 2024 and 25. So the All India Children's Educational E-Content Competition is back for the year 2024 and 25. We invite teachers, educators, students and independent educational e-content creators to submit their best e-content for the competition. For further details and the registration form, please visit the activity section of our official website at www.ciet.ncert.gov.in or scan the QR code on the screen, and the final date of submission is January 31st, 2025. And within 2-3 minutes we are with our online training program 4 to 5 p.m. and the topic for that program is concerns of using digital टेक्नोलॉजीज फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस। 5 बजे सहयोग सत्र का समय होगा, बात होगी पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट को लेकर। 6 बजे आपके लिए नीपा NCSL सत्र प्रस्तुत किया जाएगा, विषय होगा लीडिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू स्किल्स एनहांसमेंट इन GSS हरियाणा स्कूल। सो आप सभी हमसे जुड़े रहें इन विभिन्न माध्यमों से। इस सत्र से मैं सृजन चाहूँगी अनुमति। नमस्कार।